whatever the product or part of product or feature that industry that company is producing, 99.9996% of produced products would be defect free. Now you can understand the kind of commitment, the kind of aim, the kind of goal this Six Sigma levels maintain. Now, if that level of quality we want to achieve, you all will appreciate that what kind of focus, what kind of involvement, what kind of controlling, monitoring, and directing way would be in place to make sure that every product coming out of the manufacturing plant is defect free. Now, to make sure this, until unless you have a deeper insight, a good insight of what actually it is, what actually the process which is going to ensure this, I don't think anybody would be in position to appreciate or to make sure that the objectives are achieved. So the first thing which needs to be understood by everyone is the fundamentals, is the core fundamentals, because it is the fundamental which in practice are going to be implemented. Of course, strategies will be adopted, will be formulated by top level management, by the experts after taking different factors. But once all those strategies are in place, making sure that those strategies are implemented on ground in the process is very important. And you, especially the students of BBA, irrespective of year in which they are, whether in first year or second year, at some point of time, you will have to demonstrate this ability that you have right kind of understanding, right kind of skill set, and then you have right kind of approach to make sure that this ambitious process of creating something is follows in verbatim, in principle. There is I think this since we will talk later on sometime when we get opportunity to speak, because we will keep interacting in time to come. Today we have a person who in fact has spent his life in implementing all these things from the front, to mentor the people, those who are part of such processes, to guide them that they are in position to contribute significantly in attaining the Six Sigma level objectives and goals in the businesses, Mr. Bimal Jaggi Sahab. And I'm sure this is going to be, because every time when he has visited ITS and when he conducted these workshops, it was well appreciated by every student. And trust me, in the morning around 9 o'clock, if this workshop used to start at campus, if this were not the pandemic COVID-19 situation, and if you all were at campus, you would have been listening, interacting with him with different cases in our seminar hall or auditorium. So whenever he had visited the campus, whenever I had that different multiple opportunities to interact with him, to be part of those workshops, and it is really enlightening. It gives different perspective altogether, which is the basis for any management student. Because as a management student, you are not only going to manage the businesses. When you call them manage the business, what do you mean by the management? And there are different things, and all those activities where you would be involved will be directed towards the quality outcome of the business, because ultimately a business survives and sustains only the kind of quality it provides in the services, the products, whatever it is offering. I understand that this is going to be a wonderful experience for all of us, those who are part of this session. You will enjoy it. Try to take maximum of it. I every time say it, because you're not going to study this in your syllabus. Nowhere this is part of the syllabus. Even if it is part of syllabus, you will be studying through books or somewhere else. But a person who practices it, when he comes and interacts, trust me, he gives different perspective, which actually you would be able to apply in an year or two. Because very soon, those who are in second year, if some of the students are from second year, in fifth semester, they are going to face the interviews. The companies are going to visit. And while interviewing,
every person who comes for interview, who knows you are studying financial management, you are studying HR, you are studying marketing, you are studying finance, you are studying operations. They know you are studying, but what else do you have in a store which can be helpful for them? So try to keep all these both in your so that when time comes, you are in position to say that apart from my subject, this is something which is very relevant to the industry in present context, and I will be able to contribute differently from those thousands of students, those who did not have this privilege to attend such kind of workshops. Jaggi Saab, once again, on behalf of Institute, I welcome you in this workshop. And I'm sure this 1 week is going to be a wonderful experience for all the students and for us too. Thank you so much and welcome to this workshop at ITS. Uttam ji. Thank you so much, sir. No beginning, no introduction can be better than this. Thank you so much for setting the right platform for this course, sir. And I assure you that the students will be participating very actively in this work in this course, and definitely it is going to add a great value to their profile, and it will help them to be placed in good companies, because as you said that yes, the company would be coming to the campus, and whatever additional is added to the profile of a student, it will help them to grab good opportunities in the market. I assure you and ma'am as well that in coordination with the coordinator BBA first year, Professor Pavan Kumar Singh, will be continuously monitoring the attendance of the students, and we'll ensure that the maximum students get the benefit of this workshop, this online course. Students, I would request you to be more participative and to be more interactive. Ask questions wherever you feel asking questions. And thank you so much, sir. Once again, now I would request the resource person, Mr. Bimal Jaggi, sir, to take over, please. Over to you, sir. Singh Saab is mute probably. Uttam Am I ji. audible? Yes, yes, Jaggi Saab. So thank you very much, Uttam sir, and very good morning to Honorable Dr. Sunil Kumar Pandey, Director sir, respected Nancy Sharma ma'am, and all the faculty members and dear students. I am privileged and honored to be a part of this wonderful session in ITS. So as Director sir and ma'am already explained so many things about the Six Sigma. So I think there is some few words are there only to explain. But yes, definitely I will give my efforts, whatever I have done in my organizations earlier. So I would like to provide all the details to the students. So when the ITS is going to organize these type of seminars and the workshops to the students, that they are doing something special to the students. Like apart from your studies, it is very, very important to earn something good, something new, which is the job oriented. So when you are doing something like the Six Sigma, like Tally, data scientist, so these all are the subjects, like those are job oriented and will definitely provide you the opportunities to get the good jobs in the organization. Like I would like to say that when you are doing these type of jobs or these type of certifications of the workshop, that means you are putting yourself ahead of the crowd. Those are seeking for the job. So I can see that there are so many students, those have joined this workshop, but still, I think that there would be some those would not be able to join today. But I think that whenever you are going to face any interview, like in the final year, when you will be appearing for an interview, you would be having a resume with you along with you, right? So definitely
notice over there that each and every student would be having a resume stating their name, their address, their qualification, their the experience. I think that there is no professional experience for the BBA students, because they just need to join the organization, right? So each and every resume of the organization of the students would be the same, but in order to put yourself out of the crowd, you need to do these type of certification courses. So when you mention in your resume that apart from doing the BA, and you are pursuing BBA, I think in the final year you would be getting the organization for the placement, right? So that time would be still pursuing the BBA. Okay, so when you are forwarding your resume to the company representative stating that apart from pursuing BBA, you are already experienced or the certified Six Sigma Yellow Belt student. So that would be exceptional thing. That thing is putting yourself ahead for others. Okay, so that would be a very good thing for you, and I appreciate ITS management, Dr. Sunil Pandey sir, ma'am, and all the faculty members that they appreciate, they made the efforts to arrange these type of workshops for the students, so that they could go ahead and get the better opportunity in the multinational companies, right? So not going so far, I'm just going to present my presentation so that I could explain each and everything to all of you. Okay, so my screen is visible. Yes, Jackie sir. Thank you. So just as we are going to start Six Sigma Yellow Belt certification course, workshop, I would like to tell you that Six Sigma is basically a quality course. Like everybody is interested to get some sort of quality in terms of the money, right? So whenever you go to purchase a pen of just rupees 10, you want some quality from that. Only for 10 rupees pen, you are looking so many things, like you will be getting the color of the pen, whether the writing of the pen is good, okay, whether it is not breaking over there when you are writing, okay. So each and everything you would be considering when you are purchasing the pen of rupees 10. So when only for rupees 10 you are checking the quality, and suppose if you are working for an organization and he or they would be paying so much of amount, so much of the package to you people, so that means they are also asking the quality work from your side, right? So until or unless you would be able to provide the quality, you would not be able to be a good employee, right? So in each and every field, this Six Sigma methodology would be applied. So let's start. Like before the Six Sigma process, each and every organization need some sort of money, some revenue, some growth, because this is a competitive era, and everybody is competing to each other. And if you are not getting that type of growth and the revenue which you are expecting, that means that you would be
somewhere you would be disappointed for that. So as already explained about myself, and I would like to tell you about this, I am a green belt certified, and I had worked with HCL Technologies Noida for 14 years, Energizer 2 years, and Western Electronics 5 years, and Hindustan Limited 2 years. So what do you think that how good is good enough? When you say it is good, so how would you think that it is good? Like when we talk about the 93%, scoring 93% in the studies, it is a big achievement indeed. Yes, whenever any of our students get above 90%, that is a good achievement. But when we say that 93% is a big achievement, but what about the business when you're talking about the 93%? So if we are going to give a 93% to the business, what does it matter? Will you check what we can do in this case? In this screen, we can see here, I have just compared this like with the education. When we say 93% education, that means it is very good. Because above 90 is very, very a performing result for the student. And but when we talk about the business, and when we talk about the 93%, that means the business is on the 3 sigma level. We are talking about the 6 sigma level here. But when we are talking about the 93% of the business, that means our business is at 3 sigma level. So there is a difference. But when we talk about the 99.997 or the 666%, suppose if you are getting some score in 99.997% in the education, so that means if we compare it to the business, that time the business would be the 6 sigma level. So, and now in this scenario, each and every organization wants to be at the 6 sigma level, because until or unless you are at 6 sigma level, you would not be able to complete the work, to complete the organization. So in order to get the quality work, you get the satisfaction of the customer, you just need to get to 6 sigma. So in this case, in this workshop, first of all, we need to check that whenever we try to start the project in the organization, what we do is, first of all, we measure at what level the organization is currently, whether it is at 3 sigma level, whether it is 4 sigma level, 5 sigma level, or 6 sigma level. So once we receive the result that currently the organization it is at this particular level of the sigma, we try to improve this. So now here we will check some, I will differentiate, and I will, make some details over here for you people. Like when we talk about the air fights crashed. So when we apply 93% in the air flights, field, okay, so that time 6 flights every day will be crashed. You can see that, just a moment please. Okay, so along with, I think it would be good if I use some sort of Hindi words in between the presentation, so that we can properly understand each and everything, right?
So when we talk about the education, like I will say that suppose एक कोई स्टूडेंट है, उसको 93% उसकी एजुकेशन का लेवल है, 93% उसने स्कोर किया और उसका लेवल 3 सिग्मा बिजनेस में माना जाएगा। अगर आप एजुकेशन में 93% दे रहे हैं, दैट मीन्स इट इज गुड, बट व्हेन यू आर गिविंग 93% इन द बिजनेस, दैट मीन्स समथिंग नॉट गुड। ओके, सो जब हम बात करते हैं एरोप्लेन्स की, कोई भी कंपनी है, चाहे इंडिगो हो, एयर का इंडियन एयरलाइंस हो या स्पाइस जेट हो, अगर सपोज कीजिए अगर ये कंपनीज 93% वाली फिलॉसफी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करती हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो क्या होने वाला है? अगर वो 93% को अप्लाई करते हैं तो उनकी 6 फ्लाइट्स जो होंगी रोज क्रैश होंगी। अब आप देख लीजिए 7% का डिफरेंस कितना ज्यादा है। सिर्फ 7% की कमी की वजह से 6 फ्लाइट्स डेली क्रैश होंगी। Would you like to go through that flight? Those are just assuring you the 93% of your safety. No, never, because you are paying to them. अगर आपसे वो ये कहें कि सर थोड़ी टिकट सस्ती है comparative to other flights, we are providing you tickets on the cheap rates. Like suppose the other companies are providing you the tickets on 5,000 rupees. We will be providing the tickets on 1,000 rupees, 1,500 rupees, but the surety is only the 93%. You will never go. Definitely you will never go. कोई भरोसा नहीं है। 7% में पता नहीं क्या हो जाए। बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो वो पैसे जो बचाए हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो हम यूज भी नहीं कर पाएंगे, है नहीं? अब अगर यही बिजनेस, अगर यही फ्लाइट ये कंपनी मान लिया इंडिगो है और वो कहती है कि मैं श्योरिटी देती हूँ कि मेरी जो फ्लाइट है दैट बिलीव एंड दैट अप्लाई 6 सिग्मा, दैट इज 99.997%, दैट मीन्स कि वो में कोई ऐसा केस होगा जिसमें कि उनकी फ्लाइट क्रैश होगी। आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है 6 सिग्मा, कितनी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लाइट्स। इस तरीके से अगर हम अपनी क्वालिटी को अगर डाउन करके रखेंगे तो रोज ही फ्लाइट क्रैश होंगी। एक एक प्लेन ही कितने करोड़ों रुपए का आता है, फिर उसके बाद कितनी लाइव्स जाएंगी, फिर कहाँ गिरेगा वो, वहां पर जो लोग गिरेंगे उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दैट इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। So we must assure the quality when we are talking about the flights. Okay, so when the company is assuring it that they are applying 6 sigma, that means they are applying 99.997% quality. When we talk about the quality क्या हो सकती है? क्वालिटी में ये हो सकता है कि सपोज प्लेन ने टेक ऑफ किया और उसका इंजन खराब हो गया, या फिर आपका उसका व्हील निकल गया, तो लैंड कैसे करेगा, या उसकी जो सीट्स है वो कंफर्टेबल नहीं है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो हम जब एरर्स की बात करेंगे, जब हम मिस्टेक्स की बात करेंगे तो उस टाइम हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल की या डॉक्टर्स की, तो अगर डॉक्टर, जस्ट अ मिनट प्लीज, ओके, सो जब हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, तो इफ दे आर अप्लाइंग 93% like the 3 sigma level,
in the hospital, that means 5,000 जो आपके ऑपरेशंस होंगे, जो सर्जिकल ऑपरेशंस होंगे, वो गलत होंगे, और वो भी पर वीक। एक हफ्ते में अगर 93% टाइप की क्वालिटी अगर अप्लाई करते हैं हॉस्पिटल, तो वो 5,000 केसेस उनके गलत होंगे। वो चाहे उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ऑपरेशन ठीक ना हुआ हो, चाहे वो प्रॉपर तरीके से आपने उसकी स्टिचिंग ना की हो, मतलब देयर आर एन नंबर्स ऑफ रीजंस। सो 5,000 केसेस पर वीक, अगर हॉस्पिटल इस चीज को अप्लाई ना करे तो उनके लिए ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब एक डॉक्टर अगर आपसे ये कहता है कि वी आर एश्योरिंग यू द 93% ऑफ सेफ्टी, तो शायद मुश्किल से आप जाएंगे नहीं। और स्पेशली जब कोई ये गए जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कि आपका हार्ट का ऑपरेशन वगैरह लोगों का करते हैं, अगर वो ये कहें कि ठीक है आप एडमिट होने के लिए आ जाइए, ऑपरेशन करवाने आ जाइए, और हम आपको एश्योरिटी देते हैं कि 93% हम आपको बचा लेंगे, but about the 7%, so we cannot compromise on in the hospital, in the operations when we are talking about the treatment. So it should be 99.997 for the hospitals as well. So when we are applying 99.997% of the Six Sigma in the hospitalization, so the cases, those were the 5,000 per week, that would reduce to 2 cases per week. अब उसमें भी सर्जिकल ऑपरेशंस पे जरूरी नहीं है कि वो किसी की जान ही चली जाए, हो सकता है कि ऑपरेशन गलत हो या थोड़ा सा कोई इंफेक्शन उसको हो जाए, तो इस टाइप की कोई भी चीज उसके अंदर हो सकती है। Similarly, when we talk about the financial operations के अंदर कुछ भी सपोज हो सकता है कि जैसे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी के अंदर हो, चाहे वो आपका पेट्रोल पंप पर अगर कोई आदमी आपसे पैसे ही ले रहा है, आपके पेट्रोल भरवाने आप जा रहे हैं, तो उस पर भी कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो अगर उस केस में अगर हम 3 सिग्मा लेवल के ऊपर हैं या 93% के ऊपर काम करते हैं, तो उस केस में भी हम जो है 1,40,000 गलतियां करेंगे पर आवर, अगर हमारा बिजनेस 93% के ऊपर है या 3 सिग्मा लेवल के ऊपर काम करता है। और अगर हम इसमें 6 सिग्मा अप्लाई कर देते हैं तो ओनली 75 पर आवर ये जो है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर गलत हो पाएगी। तो हमारे आप देख रहे हैं कितनी बिग अचीवमेंट है एक 6 सिग्मा को अप्लाई करना। सिमिलरली when we talk about the articles, आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं या कोरियर में जाते हैं, अपने लेटर्स को पोस्ट करते हैं। इवन most of the cases when the Rakhi is there, when the Deepavali is there, so earlier the people were keep sending the Rakhis and the greeting cards to the dear ones, right? So that time there is a huge कि इतना परेशानी वाली चीज हो जाती है कि इतना लॉट हो जाता है उस टाइम की सामान कोरियर्स को पहुंचाने का और देने का। उस केसेस के अंदर अगर हम 93% के 3 सिग्मा लेवल बिजनेस अगर हम अप्लाई करते हैं तो 12,420 जो लेटर्स होंगे, जो वो हमारे कोरियर्स होंगे, वो हमारे लॉस हो जाएंगे, मिसप्लेस हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसी में 6 सिग्मा को अप्लाई कर देते हैं तो ओनली 7 आर्टिकल्स वुड बी लॉस्ट। क्योंकि क्वालिटी जो है बेसिकली वी आर नॉट एबल टू गिव द 100% क्वालिटी, isn't it? 100% क्वालिटी आप नहीं दे सकते। That is why it is showing that whenever we are applying 6 sigma level in the business, we are giving 99.997%. We are not assuring you that we are giving the 100% in the business level. But yes, it is far better than the other levels. Okay. So this is the difference which we have seen. And when we talk about the different levels of the real world performance, you can see that pieces of your mail lost per year. अगर
आपकी जो लेटर्स हैं पर ईयर जो हो जाते हैं, अगर आपका प्रोसेस, अगर आपकी क्वालिटी सर्विस 1 सिग्मा के ऊपर है तो 1106 लेटर्स आप लॉस कर देंगे. बट इफ यू आर अप्लाइंग 3 सिग्मा, दैट टाइम इट वुड रिड्यूस टू 107. जहां 1106 लेटर्स आप मिसप्लेस कर रहे थे, खो रहे थे लोगों के, कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था कि उनके लेटर्स वहां डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. आप जब 3 सिग्मा अप्लाई करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि द डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस टू 107. सिर्फ 107 लेटर आपके पर ईयर हो जाएंगे अगर आपने 3 सिग्मा को अप्लाई किया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 6 सिग्मा, किसी पूरे कंपनी ने 6 सिग्मा को अप्लाई किया हुआ है तो केवल एक, ओनली 1 इन अ ईयर दे विल लॉस. आप देख रहे हैं जहां 1106 लेटर जहां पर मिसप्लेस हो रहे हैं, कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन कहाँ कितना बड़ा होगा, और कहां पर एक या उससे कम होगा तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 100% क्वालिटी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं 6 सिग्मा के अंदर अप्लाई किया जाता है कि हम 99.97% एक्यूरेसी या क्वालिटी दे पाए. सेकेंड, अगेन द सेम थिंग, द एयरक्राफ्ट. जैसे कि मैंने बताया कि टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं तो उसमें अगर 1 सिग्मा के ऊपर है तो 25 बार जो है फ्लाइट, 10 फ्लाइट जो है वो क्रैश हो जाएंगे क्योंकि कोई ना कोई इश्यू होगा. ठीक है, 10 फ्लाइट्स 25 टाइम्स. सिमिलरली फॉर 3 सिग्मा 100 फ्लाइट्स में 24 टाइम्स, 10 फ्लाइट्स में 25 बार 1 सिग्मा में, और 100 फ्लाइट्स में 24 टाइम्स 3 सिग्मा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द 6 सिग्मा, मिलियन फ्लाइट्स, यानी कि 10 लाख फ्लाइट्स के अंदर सिर्फ 12 बार जो आपकी फ्लाइट है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आई. यू कैन सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस दैट when we apply 6 sigma in an organization. Similarly, number of empty copy pots at work, keyboard who didn't fill the coffee pot again, दोबारा नहीं भरे गए तो उसमें भी 470, 45 less than 1. So similarly we can see that there are so many examples shown here. And in the last you can see that in the United States alone, if the 6 sigma level were between 3 and 4, अगर हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर 3 या 4 के बीच में अगर सिग्मा लेवल है यूनाइटेड स्टेट्स में, था पहले उनका, तो जो हमने रिकॉर्ड निकाला है, सो वहां पर 50 नए न्यू बेबी जो थे वो ड्रॉप हो गए, मतलब मिसकैरेज हो गया, और 5000 इनकरेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर पर वीक हुए. तो ये लाइव एग्जांपल्स हैं, लाइव स्टेटमेंट्स मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ 3 और 4 के बीच में, अगर हम अभी भी कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, अगर हम जाते हैं मान लिया कहीं पर भी कि वो 6 सिग्मा अप्लाई नहीं करते, क्योंकि तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो 6 सिग्मा अप्लाई करती नहीं है, तो जस्ट दे माइंड अप द कि बस कस्टमर आ गया, पेशेंट आ गया, पैसे लिए, अपना काम किया, कस्टमर को भेज दो. आपने कई जगह देखा किसी का ऑपरेशन हुआ, कैंची बीच में छोड़ दी डॉक्टर ने. तो इस टाइप की चीजें ये कहाँ होती हैं? छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में होती हैं. अगर आप अपोलो में जाएंगे, ठीक है, मैक्स में जाएंगे, इस टाइप के जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये दे पीपल ऑलवेज प्रेफर द क्वालिटी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट द 6 सिग्मा, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी. So what is quality? So there are so many economists are there, the sociologists are there, those have explained the quality in their own words. So when we talk about the damming, he says quality is defined from the customer's point of view as anything that enhances their satisfaction. So basically, as per the damming, quality is concerned with the satisfaction. If you are providing the quality to the customer,
the customer satisfaction level will be high. If you are not providing the quality to the customer satisfaction level will be low. Similarly, when we talk about the Zoran, it says fitness for use. Those products, features which meet the needs of customers and thereby provide product satisfaction, freedom from deficiency. Again, he is talking about the satisfaction, but in another words. Here he is saying freedom from deficiencies. Deficiencies mean कमियां, यानी lacking somewhere. तो अगर हम अपनी उस कमियों से, उस प्रोडक्ट की कमियों से, प्रोडक्ट के अंदर जो भी क्वालिटी की जो दिक्कत आ रही है, उससे अगर हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा हमारा। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी, अगर आपने कई बार आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि पिक्चर दिन में गए, 300 रुपए का टिकट लिया आपने और पिक्चर देखी, तो बाहर जब लोग आ रहे होते हैं उनसे पूछो कैसी थी, बकवास थी, 300 रुपए खराब हो गए। दैट मीन्स इट वॉज नॉट वर्थ। तो 300 रुपए थे, वो 300 रुपए के लायक भी पिक्चर नहीं। तो कस्टमर इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेटिस्फेक्शन। अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आपके पास आएगा, अदरवाइज नहीं है। समझ में आया? तो सिमिलरली अगर हम ASQC की डेफिनेशन देखते हैं तो अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट द सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स। यहाँ पर भी उसने सेटिस्फेक्शन को ही एक तरीके से मेन फोकस कर दिया। तो क्वालिटी इज ऑल अबाउट द सेटिस्फेक्शन। Similarly, COPC is a customer operation performance center. They are also explaining the quality, and quality is defined as knowledge of agents that would enable them to provide accurate and consistent solution to the customer at the very first attempt. अब very first attempt के अंदर basically आप जब आप किसी BPO के बारे में अगर आप बात करें, कॉल सेंटर के बारे में बात करें, या कभी भी आप बात करते हैं, जैसे सपोज एयरटेल में बात करते हैं, वोडाफोन में बात करते हैं, या आपका कोई टीवी खराब हो गया या आपका बैटरी इन्वर्टर खराब हो गया, तो हमेशा आप कस्टमर केयर में बात करते हैं। तो उनके पास एक टारगेट होता है। वो टारगेट क्या होता है कि FCR का टारगेट। यहाँ हम लास्ट में बात कर रहे हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट मीन्स FCR, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो कस्टमर आपके पास आया क्वेरी लेके, क्या आपने उसको सेटिस्फाई किया? क्या आपने उसकी फर्स्ट कॉल में ही उसको सेटिस्फाई कर दिया? क्या आपने उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको फुलफिल कर दिया? अगर कर दिया, अगर कस्टमर उसी सेम कंप्लेंट के लिए दोबारा अप्रोच नहीं कर रहा कस्टमर सेंटर के ऊपर, दैट मीन्स दैट कॉल इज द FCR कॉल। तो हमेशा जितने भी कॉल सेंटर्स होते हैं उनका बेसिक जो मोटिव होता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे कस्टमर को खुश नहीं कर रहे, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि वो दोबारा आएगा, और जितनी बार ज्यादा आएगा उतना बार वो डिससेटिस्फाई होगा। आपने एक बार बोला एयरटेल पे फोन करके, सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उसने बोलो कि ठीक है सर हम कर देते हैं, आपका 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। 2 घंटे के बाद फिर आपने फोन किया, 3 घंटे आपने, इंटरनेट के बगैर रुकना बड़ा मुश्किल काम है। स्टूडेंट्स तो ऑलवेज ऑन द इंटरनेट, दे कीप सर्फिंग, और अब तो खैर पढ़ाई भी आपकी ऑनलाइन हो गई है। तो इंटरनेट कितना इम्पोर्टेंट है हर एक आदमी के लिए, कितनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन रुक जाती हैं। अब 2 घंटे रुकना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी चलो कहा तो रुक गए। 2 घंटे के बाद फिर फोन किया, सर वो मेरा तो इंटरनेट नहीं चला। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो एजेंट पहले मिला था वो नहीं मिलेगा, वो कोई और मिलेगा। अब आप गुस्सा नहीं कर सकते उसको। अगर पहले बार मिल जाए फिर तो आप उसको अच्छी सुनाओगे, भैया 2 घंटे कहा था, क्या हुआ? 2 घंटे मेरा इतना काम खराब हो गया। अब मिलेगा दूसरा आपको, अब वो फिर आपकी कंप्लेंट ले लेगा।
फिर वो बोलेगा सर 2 घंटे आपके पास और हो जाएंगे, 2 घंटे के अंदर अंदर आपका डेफिनेटली ये काम सॉल्व हो जाएगा। अब आप 2 घंटे और वेट करेंगे, और फिर 2 घंटे बाद 3 घंटे, बड़ी मुश्किल से 2 घंटे निकालेंगे, फिर दोबारा कॉल कर देंगे तो इंटरनेट फिर नहीं चल रहा। अब क्या हो रहा है, आपका डिससेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ COPC की अटेम्प्ट जो हमारा जो डेफिनेशन है इसके अंदर, वो बेसिकली ही इज डिस्क्राइबिंग दैट इट शुड बी द सॉल्यूशन दैट शुड बी एट द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आप अगर पहली कॉल के अंदर ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड बस। Okay, so similarly, ISO is also providing the same definition of the quality. Okay, so simply अगर हम कहें कि इन सब चीजों से हमें जो बेस जो निकलता है, जो हम उसको समराइज करते हैं, तो that is basically we talk about the understanding the customer requirements, designing the product and services that satisfies those requirements, developing processes that are capable of producing those products and services, and controlling and managing those processes so that consistently deliver to their capabilities. So अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं तो हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, so I think that's all for the day. Uttam sir. Yes sir. I think it is already 10:15. Right. Okay. If you allow, we can end the session and we can continue tomorrow. Okay. Yes, we can continue tomorrow. In case students are having any question before we wrap up today's session, so you can ask. Do you have any question related to the concept of Six Sigma or the concept of the quality or anything which has been covered till now? Any student having any question can send in the chat box. Or maybe you can raise your hand. I'll unmute you and you can ask your question. If you do not have any question, we'll connect tomorrow at the same time. Please try to connect at 9 o'clock so that we can start the session on time, please. Yes, students, do you have any question? Any one of you having any question? Okay, so I assume that there are no questions to be asked related to the definition of quality or whatever has been covered till now. So with this, we conclude today's session. Thank you so much, Jagiji, for starting the session, and we'll see you tomorrow at the same time. Thank you, Director Sir. Thank you, Vice Principal, ma'am. Thank you, dear students. Please connect at the same time tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Okay. Thank you, sir. Right, sir. Thank you.